Yes, today we will discuss about the next one topic of the chapter number 9, the concept of revenue. In this chapter now we will discuss about the topic of firm revenue curve in different markets. It means there are the different forms of the market, and in under that different forms of market, which kind of the revenue curve is there. So initially, I will tell you that broadly there are mainly three types of forms of market in which the demand curve can be determined. Otherwise, the one more form of the market is there, but in that form, market demand curve cannot be determined. So here we will only discuss about the three major form. The first one is the perfectly competitive market. Second one is the monopoly market, and third one is the monopolistic competitive market. Initially, I will tell you the short the short intro of all these three forms of the market. Perfectly competitive market is a that market where large number of buyers and sellers are existing, but the sellers are selling the homogeneous product. Remember very carefully, under this form of market, sellers are selling homogeneous product. Because of due to this reason, we can say mainly the sellers are not the price maker, they are the price taker. The industry is there which determine the prices of the product. कि परफेक्ट कंपटीशन में सभी के सभी एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो इन दैट केस व्हाट कैन वी से कि जो सेलर है, जो एक फर्म है, वो प्राइस टेकर नहीं है, वो सिर्फ प्राइस मेकर है. सॉरी, दैट इज नॉट द प्राइस मेकर, दैट इज ओनली द प्राइस टेकर. इट मीन्स कि फर्म को जो है सिर्फ प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो अपने लेवल पे प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती. सो फर्म रिवेन्यू कर्व आर देयर इन केस ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, in which I just already told you that a firm is a price taker here, not the price maker. सो इन केस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, एक फर्म जो है वो अगर प्राइजेस को चेंज करने की कोशिश करे तो व्हाट विल हैपन, इट कैन सेल द एनी क्वांटिटी, मतलब कुछ भी क्वांटिटी जो है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सेल ऑफ कर सकती है. अगर वो हाई प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेगी तो उसके सारे कस्टमर्स लूज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उससे कम प्राइस है, और अगर वो कम प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेगी तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी. दैट जस्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द फर्म आल्सो. सो नो वन फर्म अंडर द case of the perfect competition, they cannot change the price. They will have to accept the price which is existing in the market. Okay, तो यहाँ पर अब क्या है, प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है. इट मींस एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज कांस्टेंट. और अगर कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट. इट मींस AR is equal to MR. So simply in case of the perfect competition, the behavior of the firm revenue curve is there, which is the output, कि output कितना भी increase हो रहा है, prices constant है, it means average revenue is constant. तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जितनी यूनिट एक फर्म सेल करती जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइजेस मिलेंगे. Right? After that, marginal revenue, the change will also be similar. So here we can say in case of the perfect competition, the average revenue and marginal revenue are equal to each other. It means at the existing price, the firm can sell at any quantity of the commodity. The revenue concept, output is there at this and the prices are constant 5. At this prices a firm can sell any quantity, means either 1, 2, 3, 4, no anything foundations are there. But if a firm will try to change the prices, they cannot stand in the market. So this is the simple situation of the revenue curve under the case of the perfect competition. Next one is there, that is the revenue curve under monopoly.
So now here we will have to understand the meaning of monopoly initially. Monopoly means as per the name indication भी एक single person की monopoly है, उसी की entire power है. तो monopoly refers to a that form of market in which only the one seller is there of a commodity, कि एक particular product का सिर्फ क्या है, एक single seller ही है, राइट. इन दिस सिचुएशन क्या स्टेट आ जाती है कि अगर एक फर्म अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है, देन दे कैन डू इट ओनली बाय डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस. तो यहाँ पर जनरली जो एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है वो स्लोप्स कैसे करता है, डाउनवर्ड, लेफ्ट से राइट की तरफ. इट मींस कि अगर एक मोनोपोलिस्ट जो है वो ज्यादा सेल करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट जो है वही एक फर्म है, वही एक इंडस्ट्री है, तो वो खुद ही प्राइस बनाता है प्रोडक्ट का. ओके, वो कितना भी प्राइस फिक्स कर सकता है जितना कि वो उसको सेल ऑफ करना चाहता है. और अगर सपोज इफ देयर इज अ रिलेशनशिप कि अगर उसको ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो कैसे कर सकता है, ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस. इट मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट. तो फर्म का जो रिवेन्यू कर्व है दैट विल बी द स्लोप्स डाउनवर्ड. एंड नो डाउट हमने जो रिलेशन स्टडी किया था ए आर और एम आर का, अगर ए आर स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड तो एम आर भी डाउनवर्ड स्लोप करेगा, बट एम आर हमेशा एक स्पीडी लेवल पे वर्क करता है रेदर देन द ए आर, उससे ज्यादा तेजी से काम करता है, चाहे वो अपवर्ड जाने का है चाहे वो डाउनवर्ड जाने का है, एनीथिंग. So MR curve will also slope downward but faster than AR. So simply here in the case of the monopoly, how will the AR and MR will react? Simply this is the output. Prices जो थे वो reduce करने पड़े output को, मतलब means sales को बढ़ाने के लिए 10987. Total revenue multiplied by units 10 into 1, 9 into 2, 3 into 8, 4 into 7. This is the output. Now the question arises, MR 10, 18 minus 10, 24 minus 18, 28 minus 24. This is the MR. Now in this situation we can observe very carefully, AR is reducing, MR is also reducing, but MR is reducing at a faster rate in case of the monopoly curve. So see this very carefully. हमारा जो डिमांड कर्व, रिवेन्यू कर्व आएगा in the case of the monopoly, how it will work, this is the y axis where revenue is there, this is the x axis where output is there. Our average revenue will move in like this, downward, left to right. So marginal भी downward जाएगा left to right, but at a speedy rate than the average revenue. So this is the revenue curve under monopoly competition. In case of the monopoly, our revenue curve and the marginal revenue will move in this slope. After that, the third one situation is there that the revenue curve under monopolistic competition. तो monopolistic competition क्या होता है, सिंपली देखो. पहले मैं आपको एक इसका स्मॉल सा मीनिंग बता देती हूँ कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, as like similarly in the case of the monopolistic competition there are so many buyers and the sellers are existing in the market. But in case of the perfect competition there was the homogeneous product, and in case of the monopolistic competition there is the heterogeneous product. Heterogeneous means the product which is not similar to each other. जैसे कि अगर हम मार्केट में देखते हैं शैम्पू है, कंडीशनर है, टूथपेस्ट है, ऑल दीज आर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि यहाँ पर हैवी कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट तो एक ही होता है
बट उसको किसी ना किसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कि उसका कलर, साइज, फ्लेवर किसी भी तरीके से वो उसे चेंज कर देते हैं. So no doubt, if we are talking about the revenue curve under the case of the monopolistic competition, तो फर्म का जो revenue curve है in case of the monopolistic competition, it is also similar to the monopoly. इसमें भी हमारा सिंपली क्या आ जाता है, दैट द इफ ए फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स सेल, अगर एक फर्म क्या चाहती है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो कैसे कर सकती है, ओनली बाय रिड्यूसिंग इन द प्राइजेस. तो टोटल रिवेन्यू 10 into 1, 9.5 into 2, 9 into 3 and 4 into 8.5. And what will be the MR? MR will also be similar, reducing. So here simply also we can say, in the case of the monopolistic competition also, if a firm wants to increase its sales, it can do it only by reducing the prices of its product. So in case of the perfect competition, monopoly and monopolistic competition, we have studied it, the demand curve of every market form. Now the question arises कि इसमें elasticity कितनी होती है, कि no doubt we have told that in case of the monopoly and the monopolistic competition, वहां पर क्या situation आ जाएगी कि दोनों ही फॉर्म्स के अंदर जो एक फर्म है वो अपने प्रोडक्ट की सेल को कब इंक्रीज कर सकती है, when the and they will reduce the prices of their product. Now the question arise कि elasticity कितनी है. देखो, in case of the monopoly there is less elasticity, right? But in case of the monopolistic competition there is the more elasticity, high degree of elasticity of demand. Reason is that कि monopolistic competition में जो situation होती है, वहां पे highly competition होता है market में. इन दैट सिचुएशन की अगर एक प्रोड्यूसर, एक फर्म थोड़ा सा भी प्राइस कम करती है, या वो प्राइस, तो उससे डिमांड पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बहुत से सेलर जो है मार्केट में अवेलेबल है. बट इन केस ऑफ द मोनोपोली, ऑलरेडी ही सिंगल सेलर है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग द थिंग्स वो दे वांट टू गेट इट. बट अगर वो फिर भी सेल्स कम, अपने प्राइसेस को कम करती है, तो कुछ लोग जो पहले उस चीज को यूज नहीं कर रहे थे, वो लोग उस चीज को यूज करना शुरू कर देंगे. सो हेयर ऑलरेडी इन केस ऑफ द, we can say, x-axis is the output and y-axis of the revenue. तो ये हमारा जो डिमांड कर्व है, that is the demand curve for perfect competition. Then the second one is there, this is the demand curve for monopolistic competition, less elastic. And this is the demand curve for the monopolistic competition, more elastic. So high elasticity of, high degree of elasticity of demand is existing in the case of the monopolistic competition. So these were the simply the different revenue curves under the different form of market.